आज है डे 6 लुक 6 9 डेज ऑफ 9 फेस्टिवल लुक सीरीज का मेरे चैनल निफ्टी नेहल पे। दिस इज़ नेहा हियर और ये लुक है बहुत स्टाइलिश, पेपी, कंफर्टेबल और फ्यूजन काइंड ऑफ अ लुक। सो लेट्स सी हाउ द लुक इज़। ये एक बहुत स्टाइलिश और इंटरेस्टिंग लुक है इस एंटायर सीरीज़ का। मैंने एटलीस्ट 4 या 5 कॉम्बिनेशंस ट्राई करने के बाद ये लुक फाइनलाइज किया है। So the entire story behind this has also been so interesting. This time for a festival look, I wanted to go beyond those flared skirt, plazos and anarkalis and wanted to experiment something very different and unique. And that is how this entire look came into picture. मैंने पहना है ये सिल्क धोती स्टाइल लोअर और इसको पेयर किया है एक लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज़ के साथ में, जिसके स्लीव्स और बॉटम पे गोल्ड फॉइल का बॉर्डर है। और पहले मैंने इन दोनों को एक साथ पेयर अप किया तो कुछ इनकम्प्लीट लग रहा था और इसीलिए मैंने साथ में ऐड किया है ये बनारसी दुपट्टा, जिससे ये पूरा लुक कंप्लीट और काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। So I've tried out very different colors like white, maroon and gold together for the very first time, and when I was trying this initially I felt it's gonna be crazy and another flop look, but this is amazingly beautiful. For jewelry again I wanted to go with something simple, contemporary and stylish और इसीलिए मैंने चूज़ किया है ये maroon beads का copper paired neck piece और साथ में ये round stylish earrings जिसमें maroon center colored है, ये line ring और simple बहुत sober से maroon and gold bangles। I really enjoyed going through the process of creating this look. It had been challenging, crazy and fun all at the same time. मुझे ज़रूर बताइए आपको ये लुक और एक्सपेरिमेंट कैसा लगा। अगर आप इस तरह का कुछ क्रेजी और इंटरेस्टिंग ट्राई करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दैट विथ मी। For everybody who is new here, who has landed today on my channel, don't forget to subscribe, like, comment and share. And thank you so much. See you again for look number 7 and bye bye.